Okay, hi all. Good evening. So let's start. I hope my voice is audible and I hope the screen is also visible to everyone. I hope the screen is visible. Can you give me a confirmation if the screen is visible? Okay, lovely. So hi everyone. Let's quickly start. So एक बार जरा confirm कर दें, is the recording happening? Is the recording happening? Can you please come and confirm? Recording चल रहा है ना सबका? Okay, lovely. Thank you. ठीक है, great. So let's quickly talk about the basics first. So ये जो प्रोग्राम है, this has been organized by the Future University. जो Future University है, that is a tech platform, and they have different mentors. They have different mentors. So I am one of them. जहाँ पर मैं I take care of the algo part, right? तो why am I telling you that? Because अगर आपका कोई भी डाउट आता है regarding the content, then you have to message me. So my number is anyway on the group, but I am putting my number here also. My number is this. This is my number and my email is this. Okay. So you can save my email and my number. This is a WhatsApp number. So you can, काफी लोग कह रहे हैं not audible. Is it audible, right? I hope it's audible. It's audible, right? It's perfect. Okay, thanks. जिनका भी audible नहीं है, so if it's, let me just write, if it's not audible, please rejoin. Okay. ठीक है, right? So if you have any doubts, if you have any doubts, you should WhatsApp me because मेरे से आपको best answer WhatsApp पे मिल जाएगा fastest, right? Please note that it's a WhatsApp number. अगर आप उस पर call करोगे, the number gets blocked automatically. Okay, so there is some app, I don't know, auto block करके कुछ app है उसमें, it automatically blocks it. It automatically blocks it. So please don't call me. It's only a WhatsApp number or send me an email. Okay. But अगर आपका कोई भी doubt है, which is more to do with the administration, right? That means कि session की recording कब मिलेगी या when is the next session? All those questions will be answered by the TFU team. All those questions will be answered by the TFU team. So Samiksha will be the point of contact. Again, her number is also added on the WhatsApp group. Her number is also added on the WhatsApp group. I hope everyone is part of the WhatsApp group. I hope everyone is part of the WhatsApp group. Okay. So that's the first thing. Second thing is please write on sheet your number. I can write my number here. मैंने अभी यहाँ पे रख दिया ना, I have written my number here. You can copy it from the chat. All right. My sessions will happen in the evening. My sessions will happen in the evening, 8:30. Again, आप लोगों को पूरा calendar मिल चुका होगा. Okay. And they will be minimum 1 hour. मैं minimum बोल रहा हूँ because sometimes my sessions can go for 1.5 hours also. So please उतना time लेके आइएगा. Calendar नहीं मिला तो again I will ask Samiksha. So I will ask Samiksha to add it on the WhatsApp group tonight. You will get the complete schedule for the entire month. Okay. Apart from that, ये तो मेरे सेशन होंगे. So जो calendar होगा वो मेरे sessions का होगा. Apart from that, you will also be eligible to come for hand holding sessions. ठीक है. Hand holding sessions will be taken by my team members. Either Mr. Satyam or Mr. Sahil. वो मेरे team members हैं. Those two guys are completely technical guys. Okay. तो पहली बात तो don't ask them for their phone numbers. They will not give it to you. They don't like to get spammed. Secondly, if you ask them question related to trading, they have no idea. ठीक है. So you should know कि आपको किससे क्या question पूछना है. Anything to do with the content, you have to ask me. Okay. Anything to do with the hand holding में जब होगा, that means आपका कोई technical doubt आ रहा है. That means आपका installation नहीं चल रहा, things like that. You will have to ask my team. So basically this is Sahil and Satyam. And anything apart from that, so any administrative doubts, you have to ask the TFU team. Okay, I hope this should be clear. Apart from that, I have already sent, and I will again send it. I have sent 2 things already to you. I've sent you 2 videos. Okay, one video is to install Python, and the other video is to install the software intelligent. Okay, दो YouTube की मैंने आपको वीडियो दी हुई है. In case you have not seen it, I will put it again on the group
today after the session. Please go through this. Please go through this. आराम से slow, just go through slowly, and you should be able to do this on your own. तो पहले तो ये करिएगा. Second thing, I have also sent you a registration form. Again, on the WhatsApp group. I've sent you a registration form on the WhatsApp group. Please fill that form. Please fill that form. Okay. Once you fill that form, you will get the access to the Google Drive, but you will not get the access today. You will not get the access today. You will get the access. You will get the access in, I think, 3 days time. Our date क्या है? 3rd है, right? Yeah, you will get the access in about 3 days time. But आप उससे पहले फॉर्म को जरूर भर देना. Please fill the form before that, okay? Because I will disable the form after 3 days. I will disable the form after 3 days. It will take maybe half a minute for you to do it. Please note, जो आप जो आप email डाल रहे हो, please put a Gmail ID. ठीक है ना? Don't put Yahoo or some other ID. Please put a Gmail ID. So that, because आपको Google Drive पे access चाहिए, right? So put a Gmail ID. In case you have already filled the form with other email ID, फिर से form fill कर दो. Just fill it again with a Gmail ID. Okay. In case you have already filled it with some other email ID. Don't keep messaging me कि मेरे पास access नहीं है, because मैंने जैसे बताया आपको access अपने आप मिल जाएगा 3 दिन के बाद. Okay. जो लोग form भर लेंगे, you will automatically get the access after 3 days. I think apart from that, I will always be using only live examples. So मैं कोई historically नहीं ढूंढूंगा. Let me also show you the PPT. 1 minute. Let me share the PPT. एक बार आपको PPT दिखने लग जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा. Okay, the PPT should be visible. I hope the PPT is visible, right? So usually I don't like to read the PPT. I don't like to read it. So हर session के बाद basically जो भी मैं चीज use करूंगा, okay, जो भी मैं use करूंगा, like the PDF file और जैसे ये Excel sheet है, all these things I will send it on the WhatsApp group after the session. तो आपको, I mean, you don't have to copy this. I will send it after the session. PPT also, as I said, I will not be reading it, this PDF file. You can go through it after the session ends. Okay. Before we start, some very few important things that I should tell you. This is not a tip providing service. I don't believe in tips. That means, अगर आप मुझसे कभी message करोगे कि मैंने ये चीज buy करी भी है, what should I do? I will say I don't know. Okay. So I will not be giving any tips ever. I don't believe in that. Secondly, this is not a software which will generate any signals. मतलब ये कोई, I mean, it's not a predictive software, right? This is a code learning program, and जो हम अपने code बनाएंगे वो चीज इसमें execute हो जाएगा. There are no guarantees of any profits or returns even after the completion of the course. As you know, it's stock market. Everything has risk and reward. We'll talk about this in much detail in the money management session. All the recordings will be shared on the WhatsApp group. That's right. All the recordings and the sheets will be shared on the WhatsApp group. So ये PDF file भी and this sheet I will send. जो recordings हैं, usually क्या होता है ना? If you click on the WhatsApp group, क्या बोलते हैं उसको? Description. So once you go to the description, that is where you will keep getting all the recordings. Okay, understood? जब आप description को click करते हो, वहां पर आपकी daily की recording add होती चली जाएगी, and you can use it. The fourth point is you will not become Python experts. That's not the aim. Aim is कि हम Python को use करके automation कैसे करें. We will be showing samples on different brokers. Okay, so we will be showing samples of different brokers. So I mean, I will talk about the brokers also. Give me a minute. We will also do some backtesting. of different strategies. But जैसे आप लोगों को पता है, that backtesting does not guarantee any results in the future, right? So again, you have to take care of your risk and money management. Now comes the most important part. Learning coding and algo will take considerable effort. Okay? Please come for all sessions. Please try to come for all the sessions. अगर आपका कोई सेशन मिस हो रहा है, if in case कोई आपको जाना पड़ रहा है, कोई सेशन मिस हो रहा है, please at least go to the recordings. जैसे मैंने कहा, usually the recordings are available by next morning 11 o'clock. जैसे मैंने बोला, अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, समीक्षा इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उनको कॉल करिएगा. अगर आप मुझे मैसेज भी करेंगे
I don't have the recordings, okay? Like you just saw, right? कि अभी मैं I cannot start जब तक मेरे को host नहीं बना जा रहा. So जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है मैं वो कर ही नहीं सकता बिकॉज आई डोंट हैव द राइट्स. आई डोंट हैव द राइट्स. सो फॉर एग्जांपल आज की जो रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास सेव ही नहीं हो रही है. वो मेरे पास सेव ही नहीं हो रही. तो अगर आप मुझसे भी पूछोगे तो मुझे भी नहीं पता है. अंडरस्टूड? एनीथिंग हाउ टू कनेक्ट टू समीक्षा, हर नंबर इज ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप. हर नंबर इज ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, तो आप उनको सर्च कर लीजिएगा. शी विल बी वन ऑफ द एडमिन्स. शी विल बी वन ऑफ द एडमिन्स. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम इस program में we will learn how to do two kinds of trading, paper trading as well as live trading. So you should be very, very careful whenever you're using the codes to place actual orders on your account, because live trading bhi hoga. You are purely responsible for all the profits and losses that occur in your account, and I don't take any responsibility of any trades that happen on your account. Okay, जैसे मैंने बोला कि I will not be going through these PDF files, ये आप कर सकते हैं. So today's session is going to be on the basics of options, right? तो मैं इसको बंद ही कर देता हूँ because we will not require it. Let me just clean everything. हाँ, मैं भी ब्रोकर के बारे में बता रहा हूँ. Just give me a minute. Let me just clean everything. Okay, so let's quickly talk about the brokers also. So we can use, मैं ब्रोकर्स बता रहा हूं इन माय प्रेफरेंस लिस्ट. ठीक है ना? जब मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बोल रहा हूं, दैट मींस द लिस्ट व्हिच आई थिंक इज ब्रोकर लिस्ट बेस्ड ऑन द एपीआई स्टेबिलिटी. ठीक है, एपीआई स्टेबिलिटी. नंबर 1 आई वुड पुट जेरोधा और फायर्स, बट मैं जेरोधा को मना करूंगा. मैं मना कर दूंगा. व्हाई? बिकॉज जेरोधा चार्जेस 2,000 rupees per month for live data and 2,000 rupees per month for historical data. Okay, so I mean until and unless आप करना ही चाहते हो करो, वरना इसको अवॉइड करो. That's the first thing. Second thing is fires. Right? So again, fires is a good broker. I like it. Third, I would go with Nuvama. Fourth, I will go with Finvasia. Okay. Fifth, I will go with Upstocks. Next, अब यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ. As you can see, I am putting a little space because ये 5 ब्रोकर are more or less good. Okay, they are more or less good. But उसके बाद जो मैं अब 3 ब्रोकर लिखूंगा, उनकी API is not that great. Okay. So the next one, Finvasia zero brokerage. Correct. Finvasia zero brokerage. That's right. Okay. The next one in this list, I will put Angel. After that, I will put ICICI. Direct after this. This meeting is being recorded. अच्छा, recording हो रही है ना? ये recording is happening, right? Yeah. ICICI Direct. And after this, I would put Kotak Neo. Okay. So ये जैसे मैंने बोला, this will be my priority list. But ये तीनों अगर आप avoid कर सकते तो आप avoid कर सकते हैं, because जब आप कोडिंग देखोगे you will see a lot of issues. Okay. अब हम बात करते हैं कि हम कौन से ब्रोकर्स को यूज ही नहीं कर सकते. मैं उनके भी रीजन दे देता हूँ. धन को हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज एज ऑफ टुडे धन में वी कैन नॉट गेट एलटीपी, मतलब हमारे को लाइव प्राइस नहीं मिलता है. अब लाइव प्राइस ही नहीं मिलेगा तो कैसे यूज करेंगे, राइट? द सेकेंड वन इज ग्रो को भी हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज ग्रो की एपीआई नहीं है. द थर्ड इज शेर खान. इसमें अभी ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं चल रहा तो हम ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई इट्स नॉट वर्किंग. एंड एम स्टॉक, it does not have an API. So we cannot add these 4 because of these issues. But जैसे ही अपने issue solve कर लेंगे, we will be able to integrate them. Understood? इसके अलावा अगर आप कोई और ब्रोकर बोलते हैं like Alice, 5 पैसा, all those things, we will not be adding them because उनकी जो API है not stable at all. IIFL,
IIFL की लास्ट और बात करें तो IIFL might be possible. IIFL might be possible. I will have to check. I will have to check the stability. So एक बार मैं stability check कर लूंगा, then I will be able to give you a more confirmation. Okay. So, but apart from that, I will not be using any other. Okay. I will not be using any other. IIFL is not the most stable. No, no, no. I've worked with IIFL earlier. It was horrible. It was horrible. So it's not the most stable. Okay. So just give me a minute. Let's quickly start. Give me 1 minute. Okay, so let me quickly talk about the brokers again. Let me quickly talk about the brokers. I think we are getting a lot of messages. So let me talk about कि कौन-कौन से हम broker use कर सकते हैं. I'll again go from the top. हम क्या-क्या use कर सकते हैं? We can go with Zerodha. Okay, we can go with Zerodha. But Zerodha has one problem. Zerodha has one problem that it charges money. That it charges money. It charges 2,000 rupees per month for live data and 2,000 rupees per month for historical data. Okay. So जैसे मैंने बोला, I would rather avoid it. I would rather avoid it. I would not use it. Okay, that's the first broker. The second broker is Fires. The second broker is Fires. I have absolutely no issue. I have absolutely no issue. In fact, Fires is one of the best brokers. You can use it. कुछ लोग इसका brokerage पूछ रहे हैं. I think they charges ₹20. I think it charges ₹20 per order. Okay. Third, I will put Novama. It charges ₹9 per order. Apart from that, Novama का एक अलग जो benefit है हमारे को ये है कि I have a direct connection. I have a direct connection to the Novama tech team. I have a direct connection to the Novama tech team, API team. So अगर हमारे को कभी भी कोई let's say issue होता है in the broker, in the API, I can directly message them. And I mean, for our group, they have given this facility, one extra facility that they have given. Don't say outside that they are offering 1 month free brokerage to our group. They are offering 1 month free brokerage to our group. I told them that we have a good team of algo traders. We want free brokerage. So they are even offering 1 month free brokerage to our group, Novama team. So anyone will be interested for that. Anyone is interested for that to open account with Novama. 1 महीने के लिए वो फ्री ब्रोकरेज भी दे रहे हैं. इट्स अ लाइट अकाउंट. प्लीज नोट, नोवामा के 2 अकाउंट होते हैं. वन इज देयर एलीट अकाउंट, द सेकंड इज देयर लाइट अकाउंट. तो ये लाइट अकाउंट के लिए, दिस इज फॉर लाइट अकाउंट. इफ यू ऑलरेडी हैव, फिर आपको नहीं मिल पाएगा. अगर आपके पास ऑलरेडी है तब नहीं मिल पाएगा. अगर आप नया अकाउंट खोलोगे तभी ये हमारे को दे रहे हैं. ओके, आफ्टर 1 month it's ₹9. करेक्ट, आफ्टर 1 month it will be ₹9 per order. ओके, so जो लोग इंटरेस्टेड है, what I will do is I will just give the link on the WhatsApp group. आप वो यूज कर लेना. Fourth, I will put Finvasia. It is ₹0 per order. It is a free broker. But इसमें मैंने नोटिस क्या किया है, and again what I've noticed is not for everyone. Okay, what I've noticed is कि कभी-कभी इसका जो डेटा आता है थोड़ा स्लो आता है. Okay, so the live data that we get, right? Live data is a little slow. So I mean, you have to check. API charge भी नहीं, there is, it's free. API charge भी नहीं. API जो charge तो सबका ही free है. Okay, केवल इसी में cost है. Okay, and upstocks is also ₹20 per order. हाँ, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं there are glitches in Finvasia. देखो, फ्री ब्रोकर है तो कुछ तो इशू लेना पड़ेगा, right? If it's a free broker, थोड़ा बहुत इशू देखना पड़ेगा. But overall, I would say these 5 brokers are very very good. अगर आप ओवरऑल बात करो, राइट, बिकॉज देखो इंडिया में ऐसा कोई ब्रोकर नहीं जो कंप्लीटली ग्लिच फ्री है. वी ऑल नो दैट, राइट? सो ओवरऑल आई वुड से कि ये 5 ब्रोकर आर डिसेंट. नाउ कम्स दीस 3 ब्रोकर्स. इनमें आपको इशू लगेगा.
बट अगेन इफ यू वांट यू कैन यूज इट. एंजल में फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू वन इशू, वेरी कॉमन इशू. एक तो ये दे डोंट गिव यू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेटा. फर्स्ट इशू, they don't give you nifty and bank nifty data only. So that's a major issue, right? That's a major issue. Plus इनका एक error आता है, it's called a ping pong error. Ping pong error आता है इनका, which basically is random error. कोड चलते चलते रुक जाता है. So as I said, avoid if possible. ICICI Direct, it's okay. To be very frank, it's actually okay. It's not that bad. कोटक नियो में क्या है कि आप अगर नोटिस करोगे, so when we will do the coding part, right, you will see that इन सारे ब्रोकर्स का जो कोड है वो सेम है. ओनली कोटक न्यू हैज अ डिफरेंट कोड. ओनली कोटक न्यू हैज अ डिफरेंट कोड. सो एक तो इसका कोड ही डिफरेंट है. कोड इज वेरी डिफरेंट. प्लस इट डज नॉट हैव हिस्टोरिकल डेटा. ये हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं. सो लेट्स से इफ आई हैव अ स्ट्रैटेजी विद इंडिकेटर्स जिसमें मुझे हिस्टोरिकल डेटा करना है, उसका मैंने आपको कोड तो दूंगा मैं, बिकॉज वी विल लर्न इट. बट इसका कोड बिकॉज ये हिस्टोरिकल डेटा देता नहीं, तो वी हैव टू क्रिएट आवर ओन हिस्टोरिकल डेटा, राइट? दैट इज व्हाई आई हैव पुट दीस थ्री हियर, बिकॉज आई डोंट थिंक दे आर दैट गुड. ये चार ब्रोकर आई हैव ऑलरेडी सेड दैट इनमें हम कर ही नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज धन डजंट प्रोवाइड एलटीपी. मतलब एलटीपी मींस लाइफ प्राइस. सो सिंस इट्स देयर इज नो लाइफ प्राइस, वी कांट यूज इट. Grow does not have API. Grow does not have API, so obviously I can't use it. शेयर खान में ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं चल रहा है. शेयर खान में ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं चल रहा, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ही नहीं प्लेस होगा, तो फायदा क्या है? एम स्टॉक ऑल्सो डज नॉट हैव एन एपीआई, तो ये चारों हम यूज नहीं कर सकते. IIFL में आई हैव हैड प्रीवियसली, आई हैव हैड स्टेबिलिटी इश्यूज. ओके, आई हैव हैड स्टेबिलिटी इश्यूज प्रीवियसली इन माय ओन पर्सनल अकाउंट्स, बट दैट वाज अबाउट कपल ऑफ इयर्स बैक. तो मैं फिर से टेस्ट कर सकता हूँ इसको, whether it's working or not. So no guarantees whether it will be stable or not, but earlier I've had issues. But anyway, right? So that's about it. I think we are good enough. So let's start. सबसे पहले quickly tell me कि कितने लोग हैं जिनको futures and options में कुछ नहीं पता. They're completely new to futures and options. How many don't know futures and options at all? Okay, I can see quite a few messaging. DM भी आ रहे हैं मेरे पास काफी. ओके ठीक है. बात करते हैं, पहले फ्यूचर्स की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर्स फर्स्ट, की फ्यूचर क्या होता है. ऑलराइट, सो लेट मी ऐड रिलायंस and let me add Reliance futures. All right, so we have Reliance and we have Reliance futures. Let us see the difference, right? Let us see the difference की होता क्या है. yes, कुछ काफी लोग कह रहे हैं कि ये सब मैं, जैसे मैंने बोला, आई विल सेंड ऑल द लिंक्स, ऑल दीज फाइल्स ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप आफ्टर द सेशन. मैं सब कुछ भेज दिया करूंगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ओके, सो दिस इज रिलायंस फ्यूचर्स. ओके, अरे यार, ओके, सो कैन यू सी समथिंग? कैन यू सी कि रिलायंस और रिलायंस फ्यूचर आपको काफी सिमिलर दिख रहा होगा, राइट? रिलायंस एंड रिलायंस फ्यूचर मस्ट बी लुकिंग वेरी सिमिलर टू यू, करेक्ट? सो अगर इतना सिमिलर है, सो आई मीन व्हाई डू वी नीड इट? तो पहली बार डिफरेंस देख लेते हैं. फर्स्ट थिंग इज इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट. Futures is just a contract. So when I use the word contract, that means that when I buy a Reliance stock, I get हिस्सेदारी. मुझे उसकी हिस्सेदारी मिल जाती है. I can hold it for years and years, right? I can give it to my grandchildren. But futures जो होता है, it's a contract. मतलब उसकी कोई ना कोई उसमें मुझे हिस्सेदारी नहीं मिल रही. I'm not becoming part of Reliance. Second thing, it has an expiry date. अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है रिलायंस जैन एफयूटी, मतलब ये जनवरी में एक्सपायर कर जाएगा. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट रिलायंस, एज आई सेड, देयर इज नो एक्सपायरी डेट. अब एक्सपायरी डेट क्या होता है? इंडिया में जितने भी आपके स्टॉक्स हैं, उनकी एक्सपायरी डेट है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ. ओके, सो इफ आई ओपन माय कैलेंडर, यू विल सी दैट द लास्ट थर्सडे इज ऑन 25th जनवरी. मतलब ऑन 25th जनवरी एट 3:30 PM. उसके बाद से ये जो फ्यूचर है, इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते. ये यहां से खत्म हो जाएगा. इट विल गेट डिलीटेड. ओके, थर्ड थिंग कि द फ्यूचर्स आर नॉट फॉर एवरी स्टॉक. सारे स्टॉक्स का फ्यूचर नहीं होता. करीब टॉप 200 जो हमारे इंडिया की कंपनी है, उनमें फ्यूचर्स होते हैं, जिनको हम FNO स्टॉक्स बोलते हैं. ओके, बट अभी तक आप कह रहे होंगे कि आई मीन
ठीक है, इससे डिफरेंस क्या हो गया? आई मीन व्हाट इज अ डिफरेंस, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस. द फर्स्ट डिफरेंस इज व्हाट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग. शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है, शॉर्ट सेलिंग सबको पता है, एवरीवन नोज व्हाट शॉर्ट सेलिंग इज. एवरीवन नोज व्हाट शॉर्ट सेलिंग इज. नहीं, कुछ लोगों को नहीं पता. ओके, ठीक है. शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है, मान लो आपको लग रहा है कि कल, मान लो आपको लग रहा है कि कल मार्केट गिरने वाला है. ओके, सो जैसे अगर मैं आज रिलायंस की बात करूं, इट्स एट 2580, मुझे लग रहा है कल मार्केट गिरने वाला है, इट्स गोइंग टू फॉल टुमारो. देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सेल हियर एट 2580. आई कैन सेल. तो मैं आई एम सेलिंग फर्स्ट, प्लीज नोट, आई एम सेलिंग फर्स्ट. और जब कल मार्केट 25060 पे मान लो खुलता है, आई एम बाइंग हियर at 2560. So can you see something? I have sold first and bought later. मैंने महंगे पे सेल किया, सस्ते पे बाय किया. Did I make profit or no? Did I make profit or no? I actually made a profit of 20 points. This is called short selling. This is called short selling. Now we can actually do short selling in futures positionally. मतलब आज सेल करके कल बाय करना. We can do it positionally. ओके, बट इंडिया में आप स्टॉक्स में शॉर्ट सेल नहीं कर सकते पोजिशनली. सो दैट्स द फर्स्ट मेजर डिफरेंस बिटवीन अ स्टॉक एंड अ फ्यूचर. द नेक्स्ट मेजर डिफरेंस इज व्हाट इज कॉल्ड अ लॉट साइज. सो व्हाट आई मीन बाय लॉट साइज इज, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इफ आई वांट टू बाय लेट्स से वन क्वांटिटी, आई कैन बाय वन क्वांटिटी ऑफ रिलायंस 2 3 4, मतलब जितनी क्वांटिटी आई वांट टू बाय आई कैन बाय. बट इफ आई टॉक अबाउट द फ्यूचर्स, आई हैव टू बाय इन लॉट्स ऑफ 250, right? Now this is called a lot size. Every future will have a different lot size, and this keeps changing also. But basically what it means कि अगर मुझे फ्यूचर को बाय करना है, I have to buy minimum 250 quantity. तो इसलिए थोड़ा risky है. That's why it's a little risky also. Okay. The next point is that it has margin. Margin का मतलब है, let's say if I am buying Reliance 250 quantity, the total margin, मतलब कितना पैसा होना चाहिए मेरे अकाउंट में, that's approximately 6.5 lakh rupees. You can see here it's approximately 6.5 lakh rupees. If I talk about Reliance future, Reliance, but अगर मैं Reliance future की बात करता हूँ and I'm buying this 250 quantity, I only need around 1,15,000. 1,15,000. So you can say I am getting a 5.6 times leverage. 5.6 times leverage. This is called leverage. Okay. Leverage means, कुछ लोग कह रहे हैं screen is stuck. Is my screen stuck? Someone is saying screen is stuck. Screen is fine, right? Screen नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? It's fine, fine. ठीक है, fine है ना? ठीक है. Guys, एक okay. जिनको नहीं दिख रहा, please rejoin. Please rejoin. I think most of you is working fine. Please rejoin. Okay, please rejoin अगर आपको नहीं दिख रहा है. Okay. So I was saying कि we get 5.6 times the leverage. By अब इसका मतलब क्या हो कि let's say if I have only 1.5 lakh rupees, I can trade Reliance worth 6.5 lakh rupees. Now, is it a good thing or a bad thing? Is it a good thing or a bad thing? It's both. It's both, right? Because आपका प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा और आपका लॉस भी ज्यादा होगा. आपका प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, आपका लॉस भी ज्यादा होगा. अगेन वी विल टॉक अबाउट द मनी मैनेजमेंट पार्ट लेटर. बट ये मत सोचो हमेशा कि अगर लेवरेज मिल रहा है ऑलवेज अ गुड थिंग. नो, इट्स नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग. ओके, बट इट्स, यू शुड नो दैट दिस इज द मेजर डिफरेंस. एंड द लास्ट पॉइंट इज linearity. Okay, now what does linearity means? अगर आपने यहां देखा, did you notice कि जब Reliance, if it's going down by 100 points, Reliance future is also going down by 100 points, more or less 100 points. या फिर if Reliance is going up by 100 points, Reliance future is also going up by 100 points. That means कि अगर हमारे को Reliance मतलब इक्विटी में या फ्यूचर्स में प्रॉफिट कमाना है, we need to understand the direction. Correct? It's called a linear product. It's called a linear product because अगर आपका Reliance 1 पॉइंट से ऊपर जाएगा तो आपका फ्यूचर भी 1 पॉइंट से ऊपर जाएगा. It's almost 1:1.
But that also means that if we are not good at finding directions, then it's very hard to make money in either equity or futures. Clear? Because आपका risk to reward 1:1 का चलता है. Understood? So that's called linearity. उसको कहते हैं linearity. It's a linear product. It's a linear product. यहीं पर काम आते हैं options. So that is why there is nothing much to talk about futures, because it's a linear product. You can't really make a strategy here. But अगर हमारे को एक चीज मिलता है जो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर, then I can actually make strategies. So non-linear का मतलब क्या है? Let me remove everything. Let me add an option first, and then we'll talk about it. So I'm adding an option, which is trading at, let's say, 58 rupees or 59 rupees. You can see that this option is trading at 59 rupees, right? पहली बात तो ऑप्शन से डरना नहीं है. जो लोग नए, ऑप्शन इज ऑल्सो लाइक अ सिंबल, राइट? जैसे आप रिलायंस में ट्रेड करते हो, यू ट्रेड इन ऑप्शंस, सिंपल. विल टॉक अबाउट व्हाट ऑप्शंस आर, बट नोटिस वन थिंग, दिस ऑप्शन इज ट्रेडिंग एट 59 रुपीज, करेक्ट? अब अगर ये नीचे गिरता है, तो कितना नीचे गिर जाएगा? हाउ मच बिलो कैन इट फॉल फ्रॉम 58? व्हाट कैन बी माय मैक्सिमम लॉस? माय मैक्सिमम लॉस कैन बी 58 रुपीज, राइट? इट कैन बिकम जीरो, सिंपल. माइनस तो नहीं जाएगा, तो 58 पॉइंट का लॉस होगा, करेक्ट? बट इफ इट गोज अप, यू कैन सी, इनफैक्ट 2 दिन पहले इट वॉज ट्रेडिंग एट अबाउट 450 रुपीज, राइट? सो इफ इट गोज अप, it can go to any level, right? It can go to any level. You can actually see it went from 450 to 50, right? So वापस 450 आ सकता है. So you can see one thing that downside, for example, is at 50 rupees or 58 rupees, but upside is, let's say, 400 rupees. So is it a linear product or is it a non-linear product? Is it a linear product or is it a non-linear product? It's a non-linear product. It's a non-linear product, right? यही चीज जो नॉन लिनियरिटी है, दिस इज व्हाट मेक्स ऑप्शंस एक्साइटिंग, बिकॉज जब वो नॉन लिनियर है, दैट इज व्हेन वी कैन एक्चुअली क्रिएट स्ट्रेटजीज टू टेक बेनिफिट ऑफ द नॉन लिनियरिटी. अंडरस्टूड? सो इसलिए मोस्टली, एज यू वुड नो, पीपल हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग इन ऑप्शंस because of this feature that it's a non-linear product. So let's quickly talk about कि ऑप्शन होता क्या है, right? So let's go back to our example. I've added this option here. इसके 4 पार्ट है. निफ्टी 4th January 21,500 CE. So let me write it down here. Nifty 4th January.
Hi guys, sorry, I think there was some problem at my internet end. It just stopped. I hope screen वापस दिख रही होगी and I hope आवाज आ रही होगी. I hope the screen is visible, right? Okay, thank you. Sorry about that. Sorry about that. Yeah, I was talking about the 4th Jan, right? So Nifty 4th Jan. Then third part is 21,500, which is a strike price. And the fourth part is CE or PE. CE or PE. So let's talk about ये चार चीजें क्या हैं, right? So Nifty obviously is very straightforward. That means ये जो option है ये Nifty का है. So that's very straightforward. This option is for the Nifty, which is the underlying. Okay. So this is the underlying. 4th Jan is the expiry. अब जैसे आपने यहाँ देखा था every future has an expiry date. Similarly, every option has an expiry date. अब इंडिया में इंडेक्स की अलग एक्सपायरी होती है और स्टॉक्स की अलग होती है. When we talk about stocks, the expiry is only monthly, and it's again the last Thursday of the month. Whereas if we talk about options, so if we talk about index, so Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, and Mid Cap Nifty. We will not talk about the other two, जो आपके BSE वाले हैं. This is every Thursday. This is every Wednesday. This is every Tuesday. And this is every Monday. Okay. इनको हम बोलते हैं weekly expiries. And then obviously you have the monthly expiry, which is the last Thursday, last Wednesday, last Tuesday, and last Monday. ये last Wednesday होने वाला है in about from March. But you don't have to worry about it because ये हम जब coding करेंगे तो ये automatically हो जाएगा. ये automatically हो जाएगा तो you don't have to worry. But मैं आपको बता रहा हूँ. Okay. So this is the expiry. So basically it means कि on 4th January at 3:30 PM, again this symbol will be over और मैं इसको trade नहीं कर पाऊंगा. I will not be able to trade it. The third part is 21,500, which is called the strike price. और पूरा पंगा इसी strike price का है, तो इस पे थोड़ा time लगाएंगे. And the last one is CE. CE means call and PE means put. So what it means, let me show it to you. So I'm going to show you Nifty and let me show you a call also. So this is call. हाँ मैं बताऊंगा call means up, right? So देखो ये Nifty है, this is Nifty. So see from here, this is Nifty, okay, and this is call. Nifty call, Nifty call. Can you see some similarity? Can you see similarity? आप देख रहे होंगे कि जब Nifty ऊपर जा रहा है call ऊपर जा रहा है, and when the Nifty is coming down, call is coming down, right? Similarly, let me add a put now. Let me add a put now. So rather than using call, I'm going to use a put now. Both are Nifty only. क्या चला नहीं था क्या call? अच्छा देखो ये देखो Nifty and call. Okay, Nifty and call. ठीक है? Nifty and call. And let me put a put now. Now you see Nifty put. Nifty. एक मिनट. Let me show it with the perfect angle. हाँ अब दिखेगा आपको. So Nifty put, Nifty put. Can you see something happening? Opposite दिख रहा है आपको? So जब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे गिर रहा है, and when it is going down, this is going up, right? So you can see it's opposite, is the other way around. So what can we say? कि अगर मुझे लग रहा है, if I feel that market is going to go up, I can buy a call. And if I feel that market is going down, I can buy a put. अब मैं वर्ड can लिख रहा हूं, I am not writing the word will. और उसका रीजन है, we will talk about the reason, कि जरूरी नहीं है कि कॉल ऊपर गया, I mean स्टॉक ऊपर गया, जरूरी नहीं है कि कॉल भी ऊपर जाएगा. किसी के साथ ही हुआ है? Has anyone experienced this? कि आपको लगा मार्केट ऊपर जाने वाला है, you bought a call option, मार्केट ऊपर चला गया बट आपको कॉल में लॉस हो गया. Has anyone experienced this? हुआ होगा, राइट? सबके साथ हुआ होगा, सबके साथ हुआ होगा. सबसे बड़ा लॉस ऐसे ही हुआ है, करेक्ट, राइट? We'll talk about that and I will show you how that, why that happens. We'll talk about that, okay? So इसलिए कभी भी will use नहीं होगा. There will be no will. There will be no will. As I said,
कि if the market is going up, I can buy a call. If the market is going down, I can buy a put. So let's talk about कि what is the strike. अभी हमने ये देख लिया. Let's talk about what is the strike. Okay. So let me add Nifty here. Let's say कि let's take an example. Okay, let's say I wanted to, यहाँ का देख लेते हैं. In fact, let's see it for yesterday data. थोड़ा easy हो जाएगा समझना. So let's say yesterday I wanted to buy the call at this price. तो at 10:35 जो भी 10:35 का क्लोजिंग प्राइस था, I wanted to buy the call. मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा. Don't ask me why. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि what is a call option, what is a put option. At 10:35 I felt the market is going to go up. मैंने यहाँ पे बाय करा कॉल, and then I exited at 3 o'clock. मैंने 3 बजे एग्जिट ले लिया. So I bought it at 10:35 and exited at 3 o'clock. Okay. और मैं यहाँ पे अलग अलग कॉल ऑप्शन ट्राई करूंगा. So 21,500, 21,600 and 21,700. Now you can see कि इन तीनों में निफ्टी सेम है. The 4 Jan है सेम. The strike different है और call सेम है. मतलब only difference is the strike. So let's see the differences. So if we say the Nifty went from, I'm finding the closing prices 21,568. You can find the closing price here from 21,568 till, so यहाँ लिख लेते हैं. So 21,568 till it went to 21,689. मतलब निफ्टी में प्रॉफिट आया 121 पॉइंट्स का. बट नाउ लेट अस सी कि अगर हम कॉल को बाय करते तो क्या डिफरेंस होता. सो आई एम यूजिंग 21,500, 21,600 and 21,700. So let us see the entry, exit and P&L. So 21,500 went from 166 to 244. That means a profit of approximately 78 points. 21,600 went from 107 to 164. And 21,700 went from 64 to 97 या 98 या. ठीक है. So this is how the P&L would have happened, and you can see कि result different आ रहा है. निफ्टी का obviously 121 points का profit आ रहा है, इसमें profit कम आ रहा है, but profit आ रहा है. So Nifty went up, so obviously जो call है वो तीनों में profit आ गया. But most of the times when we look at options, we try to look at how are you taking the number. Numbers मैं ले रहा हूँ from the closing prices here. ऊपर आपको closing price दिख रहा होगा, मैं closing price ले रहा हूँ. Entry के समय भी और exit के समय भी. I'm using the closing prices. Okay. Right. So as someone is saying, we usually try to look at the relative percent. We generally like to look at the percent. So rather than looking at P&L, let's find out P&L percent. तो मेरा कितना परसेंट का मूव आया. So we can find out the percent like this. Okay. Let me just make it a little smaller. So you can see कि ठीक है, इसमें आपको 47% का मूव आया, इसमें आपका 53% का मूव आया, इसमें 53% का मूव आया, राइट. सो अगर मैं 64 पॉइंट्स का कुछ खरीदता, आई वुड हैव मेड 53% पॉइंट्स इन वन डे. ओके. बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्राइक प्राइस. इसका मतलब क्या है. सो ऑल इट मीन्स इज दैट ऑन 4th January, which is the expiry day, on 4th January, if the value of Nifty is above, okay, if the value of Nifty is above this strike price, please be very careful. On 4th January at 3:30 p.m, if the value of Nifty is above the strike price, then उस दिन this strike will have some value. So कितनी value होगी? Let's say if it is at 21,900. So आपको market 21,568 का था, you felt the market is going to go up and it did go up to 21,900.
So what will be the value of this strike on that day? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 21,900 minus 21,500, it will be 400 points. That means उस दिन 400 points का वो ऑप्शन होगा. Okay, स्टेट क्लियर हो गया? Is it clear? Is it clear? Similarly, can you tell me कि ये कितने का होगा? How much will this be? This will be 300 points and this will be 200 points. But this is not the profit. Please note, ये profit नहीं है. This is not a profit. Profit कैसे calculate करेंगे? So the profit will be exit minus the entry. This is the profit, right? And again, let's find out the P&L percent. This is my P&L percent. So you can see 140%, 180% and 212% returns in a few days, 3 days. क्योंकि ये 2nd January में एंट्री ले रहे हैं 3 days. Okay. So that is the definition of the strike. मतलब कितना प्राइस होना चाहिए निफ्टी का so that this gives me profit or not. तो अभी तक सबसे लुक्रेटिव कौन सा लग रहा है? Which is looking the most lucrative to you. अभी तक सबसे ज्यादा लुक्रेटिव कौन सा लग रहा है? Which is looking the most lucrative. कौन सा स्ट्राइक? 21,500, 21,600 कि 21,700? 21,700 looking the most lucrative, right? अभी तक सबसे ज्यादा लुक्रेटिव 21,700 लग रहा है. लुक्रेटिव मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा लग रहा है? But whenever we talk about trading, right? Whenever we talk about trading, then we have to obviously talk about the risk. We have to obviously talk about the risk. Next thing we should ask is कि what is my break even? Break even का मतलब क्या है कि निफ्टी की at what value of nifty? At what value of nifty I will not lose money in that option. ठीक है, ब्रेक इवन का क्लियर हो गया? मतलब क्या होता है ब्रेक इवन? मींस कि अगर निफ्टी इस प्राइस पे चले जाएगा आई विल नॉट लूज मनी इन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. दैट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन प्राइस. तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. स्ट्राइक प्राइस प्लस द एंट्री प्राइस. तो निफ्टी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? लेट्स कैलकुलेट. स्ट्राइक प्लस एंट्री. सो एट इफ निफ्टी इज एट 21666 on 4th January at 3:30 p.m. then I will not lose money in that option. I will not lose money in that option. ये मैंने कैसे कैलकुलेट करा दिखाते हैं. Let's say मैं इसको 21666 कर देता हूं. See this. The exit value is 166. Entry is also 166. तो P&L कितना हो गया? 0 rupees. Break even. Correct? So this is how you can find out what is the value of Nifty at which I will not lose money. I will not lose money. But यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, I found out my break even price. The next question is how much movement do I need in Nifty so that I don't lose money? ठीक है, कैसे करेंगे? It is currently at 21568. I am saying I want it to move to 21666. That means मुझे कितना मूवमेंट चाहिए? I need a movement of 98 points. I need a movement of 98 points. अगर निफ्टी 98 points ऊपर चले जाता है, then I cannot lose money. I cannot lose money in this particular option. Clear हो गया? I hope the calculation is clear. And similarly, we can find for the two also. If Nifty moves up by 139 points, I cannot lose money. And if Nifty moves up by 196 points, I cannot lose money. ठीक है? Now, जो हमने बात करी थी, why did I use the word can, right? I use the word can. अब आप खुद सोचो. Let's say you had a feeling. So we are saying I had a feeling that market will go up. And उस समय market का price है 21568. Okay. I bought call option. कौन सा वाला? 21,700. Market went up also. Market went up by 150 points. Did I make money or did I lose money? Did I make money or did I lose money? आइए चेक कर लेते हैं. So market की वैल्यू कितनी हो गई? This plus 150. I am saying on expiry. Expiry का एग्जांपल ले रहा है. On expiry. See this. I actually lost money.
I actually lost money of 40 of कहाँ गया 46 points. I actually lost money. So can you see why मैंने क्यों can बोला था? मार्केट वेंट अप ऑल्सो, मैंने कॉल को भी बाय कर लिया बट तब भी मैंने लूज कर दिया, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब व्हाट इज द एंड गोल, मैं आपको क्यों बता रहा हूं. पहली बात, लेट्स इसको, इनका कुछ नेमिंग भी होता है, लेट मी टॉक अबाउट द नेमिंग ऑल्सो. जो भी आपका ऑप्शन क्लोजेस्ट टू द एंट्री होता है उसको हम बोलते हैं एट द मनी. ओके, एटीएम मींस एट द मनी ऑप्शन. एनी ऑप्शन विच इज expensive, is called ITM, in the money, and any option which is cheaper is called OTM, out of the money. Okay, so we can say, अब ओवरऑल देखने के बाद what is the final result that we are saying कि if we trade in OTM options, they are high risk high reward. ये देखो, अगर ये ऊपर जाएगा तो परसेंटेज ज्यादा भी रिटर्न देगा, राइट? But we need more money, more movement to make it break even. So OTM is high risk, high reward. ITM is low risk, low reward. Can you see now? Is everyone clear कि हम क्यों high risk, high reward बोल रहे हैं, क्यों low risk, low reward बोल रहे हैं? I hope the numbers should make sense. ठीक है? The next question then the next question is कि कौन सा करना चाहिए? What is the best option? किसी के दिमाग में आया क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रेड? Did anyone think of this question कि ठीक है यार ये तो ठीक है, बट व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन देन? कभी भी आप स्टॉक मार्केट में बात कर रहे हो, कभी भी आप अगर स्टॉक मार्केट में बात कर रहे हो, देयर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट. क्योंकि अगर कुछ चीज बेस्ट होगी, आप खुद सोचो, अगर कुछ चीज बेस्ट होगी तो बाकी ऑप्शन तो होने ही नहीं चाहिए ना. देन व्हाई डू वी नीड सो मेनी ऑप्शंस? करेक्ट? देयर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट. Everything is dependent on risk. जैसे मैंने बोला, it's high risk, high reward. Some people might want to take high risk because they're looking for high rewards, right? So the answer depends on your psychology. It depends on your psychology. आप कैसे trader हो? Are you someone who likes to take more risk? Are you someone who likes to take less risk, less reward? Again, we will talk about that जब हम money वो back testing वाला पेज सेशन करेंगे. We'll talk about a lot of these things, right? आज only first session है, it's only overview. We will go through in lot more detail when we talk about the strategy part. Okay, let's quickly do one more concept. Have you heard कोई लोग बोलते हैं अपने आप को आई एम एन ऑप्शन बायर, और कुछ लोग बोलते हैं आई एम एन ऑप्शन सेलर. हैव यू हर्ड दिस टर्म? किसी ने सुना ये चीज कि हाँ मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ? या किसी ने सुना है आई एम एन ऑप्शन राइटिंग में ऑप्शन सेलिंग करता हूँ? सुना है ना सबने? आई होप सबने सुना हो. बट क्या आपने हैव यू एवर हर्ड आई एम अ फ्यूचर बायर या आई एम अ फ्यूचर सेलर? क्या किसी ने ये बोला है आई एम अ फ्यूचर बायर या आई एम अ फ्यूचर सेलर? कोई ये बोलता है? ये कोई नहीं बोलता, राइट? नो वन सेज आई एम अ फ्यूचर बायर, आई एम अ फ्यूचर सेलर, बट ऑप्शन के लिए सब लोग बोलते हैं. करेक्ट? नाउ व्हाई डू वी डू दैट? It again ties back to the linearity concept. Future buying is same as future selling. मतलब not obviously direction wise, but from a risk to reward perspective. They are same. Because जैसे मैंने अगर एक पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको एक पॉइंट का प्रॉफिट होगा, एक पॉइंट नीचे जाएगा तो एक पॉइंट का लॉस होगा. The risk reward is 1:1. But option buying is not same as option selling. Let's quickly take this example also. Okay, so let's talk about this example. जैसे हमने बात करी थी, अगर मैं फ्यूचर बायर अगर मैं ऑप्शंस बायर, if I am an options buyer and let's say if I buy this option for 58 rupees, I'm buying it. What is the maximum loss we have seen? If the market goes down, my maximum loss is 58 points. So this is my max loss. Correct?
मैक्स लॉस। अगर ये 0 हो गया तो मेरे को मैक्स लॉस होगा 58 पॉइंट्स का, इफ आई एम अ बायर। बट इफ इट गोज अप, I can even make 1,000 points profit. So you can see from a buyer perspective, because down 0 से नीचे नहीं जा सकता, I have limited loss. I have limited loss, but my upside is high. I have high upside. ठीक है? Let's talk about the seller. क्योंकि अगर कोई buying कर रहा है, someone is selling, right? If someone is buying, other one has to sell. Every trade has a buyer and a seller. Let's say I'm selling at 58 rupees. So I'm seller now. I'm selling. Okay. So I'm selling at 58. So it is like short selling. तो अभी हमने short selling का example लिया था. What did we say? Short selling में profit कब आएगा? When the market goes down. और when the option goes down, तब profit आएगा short selling में. तो मुझे ये कितना maximum profit होगा? If it goes to 0, my max profit कितना है? My max profit now is 58 points. Max profit, max loss नहीं, max profit is 58. Right? But if it goes up, then what is my max loss? अगर ये 58 की चीज मान लो 200 की हो गई, तो 58 पे सेल किया, 200 पे बाय किया, then my loss is 142 points. Then my loss is 142 points. Correct? So that is why you can see कि जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, because of the non-linearity, option buying and option selling may have different risk to rewards. Correct? I hope you can see that. Because of the different risk to reward, for a buyer and a seller, we say कि मैं option buyer हूं कि option seller हूं. Because as you can see, buying a call option is not same as selling a put option. Is everyone clear so far? क्या ये जो मैंने लाइन लिखी है, लास्ट लाइन, that buying a call option is not same as selling a put option, is this part clear? Conceptually, अभी numbers की बात नहीं कर रहा मैं, conceptually तो clear हो गया होगा obviously, क्योंकि अगर मैं कॉल को बाय कर रहा हूँ, दैट मींस आई हैव अपसाइड में मेरे को मैक्सिमम अनलिमिटेड प्रॉफिट है, बट अगर मैं कोई चीज सेल कर रहा हूँ, आई डोंट हैव एन अनलिमिटेड प्रॉफिट, राइट? तो कॉन्सेप्चुअली तो क्लियर हो ही गया है कि अगर मैं कोई चीज बाय कर रहा हूँ, आई हैव अनलिमिटेड प्रॉफिट, वेयर एज इफ आई एम सेलिंग समथिंग, आई कैन नॉट हैव अनलिमिटेड प्रॉफिट. करेक्ट? तो ऑब्वियसली बाइंग अ कॉल कैन नॉट बी सेम एज सेलिंग अ पुट. व्हाट इज बाइंग अ पुट? अभी तो बात करिए ना, व्हाट इज बाइंग अ पुट? इफ आई फील द मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन, आई कैन बाय अ पुट. If I feel the market is going to go down, I can buy a put. Okay. Right? All right. Great. So in the next session, we will talk in more detail differences between option buying and option selling. We will talk about option buying and option selling in much more detail in the next session. But I think I've already taken about 15 more minutes extra today because of my internet issues. But sorry about that. But let me, before I close, let me quickly talk about कि अब आपको next steps क्या करना है, ठीक है? Just give me 2 more minutes, guys. Just give me 2 more minutes. I need to tell you again क्या करना है. First thing, I will be sharing 2 links again on the WhatsApp group for Python and IntelliJ installation. Please try it on your own. अगर आपका installation नहीं होता या कोई भी error आता है, don't worry. We will have a hand holding session. Very please. Okay, don't worry about that. Second thing, I will Mac पे भी, anyone on Mac use VS Code. वैसे तो IntelliJ ही चल जाएगा, IntelliJ नहीं चल रहा, use VS Code. Okay, VS Code. Second thing, I will again share a registration link, a registration form. Once you fill it, you will get the OTP on your email. Okay. And कभी-कभी junk में चले जाते हैं, तो please check your junk also. Please use a Gmail ID. And
you will get the access of the Google Drive within 2 to 3 days. Don't message me, बस उसको fill करके रख लो, आपका हो जाएगा वो. Apart from that, I will ask the admin to share the calendar, complete calendar on the WhatsApp group. अगर अभी तक share नहीं हुआ है तो I will get that done today itself. As I said, we will try to have one hand holding session tomorrow. Try either tomorrow or Friday. Either आज क्या Wednesday है ना? Yeah, either tomorrow or Friday we will have the hand holding session in the evening. So we will try to get that done. Again, I will put it on the WhatsApp group. Apart from that, बस before we end, can you quickly tell me आज की जो speed थी, right? आज की जो मेरी speed थी, the speed was fast, slow, कैसा था? Because then I can do the same thing in the future sessions. Do you think it was slow? Do you think it was fast? क्या लगा आपको? Speed was okay. कुछ लोगों का fast आ रहा है. Okay, few people are saying fast. ठीक है. All right. So I'll try to go a little slow from the next session. I'll try to go a little slow from the next session. You will get the recordings. Okay, you will get the recordings. I mean, I will again ask the admin to send it as soon as possible on the WhatsApp group. जितनी जल्दी से जल्दी भेज सकेंगे मैं उनको कह दूंगा प्लीज भेज दें. बट जनरली आप ये मान के चलो कि आपको जो रिकॉर्डिंग है ना वो दूसरे दिन के 11 बज जाता है, बिकॉज रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी होती है ना, तो आई थिंक इसको क्या बोलते हैं HD में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. ठीक है ना? सो बट आई थिंक इट टेक्स अबाउट 11 बजे तक आपको मिल जाएगा. 11 बजे तक आपको मिल जाएगा. I've already shared my email. Let me again share it. 1 second. मैं आपको फिर से अपनी डिटेल भेज देता हूँ. As I've said, this is a WhatsApp number. I'm again sending. 1 second. एक मिनट guys, एक मिनट. जब मैं जरा सेंड कर दूँ वरना चीजें रह जाएंगी. So this is my WhatsApp number. You can drop me a WhatsApp whenever you want. Whenever you want, you can drop me a WhatsApp. बट जैसे मैंने बोला ये केवल WhatsApp नंबर है. अगर आप इस पर कॉल करेंगे आपका नंबर ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, तो प्लीज मत करिएगा. ओके, वरना मुझे बड़ा एल्गो वो सॉफ्टवेयर को जाके बड़ा टाइम लगता है उसको अनब्लॉक करने में. एंड दिस इज माय ईमेल आईडी. इफ यू हैव अ बिगर क्वेरी, लंबी क्वेरी, अगर आपकी कोई लंबी क्वेरी है तो ही मुझे ईमेल करिएगा, वरना व्हाट्सएप फास्टेस्ट रहेगा. प्लीज सेव इट विद यू. प्लीज सेव इट विद यू. हाँ, नुवामा का भी मैं बताता हूँ. या समवन इज आस्किंग अबाउट नुवामा. यस, सो एज आई सेड, Nuvama is offering us 1 month brokerage free account for our team. तो मैं आपको Nuvama का अकाउंट भी लिंक भेज दूंगा. I will send it on the group. Let me add it here, वरना मैं भूल जाऊंगा. 1 minute, where is it? So I will send the Nuvama link also on the WhatsApp group. So that's about it. I think our next session is tomorrow. But I will send the WhatsApp the calendar anyway. So again, thank you guys for joining in, and have a good night, and see you soon. Bye.